Bismillahirrahmanirrahim. In today's solid state physics lecture, I will discuss you about the lattice directions and lattice planes. तो previous lecture में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास different crystal systems क्या क्या हैं और उनकी types क्या हैं। तो आज हम उन्हीं में से कुछ चीजें और देखेंगे कि उनकी डायरेक्शंस को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ वन कैन कैलकुलेट डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ various vectors in particularly in cubic system, and then how one can calculate the lattice planes and what is the meaning of lattice planes, and then finally we will discuss the Miller indices at the end of the lecture, but we will further explore these Miller indices in the next lecture. So this is the contents of the lecture. First of all, lattice vectors, then we will discuss lattice planes, and then we will discuss the Miller indices. So let us start. Okay, I'm going to share a screen with you people, and then I will show you different material about this one. So lattice directions and planes. Lattice directions जो हैं, जिस तरीके से आप किसी भी सिस्टम का जो पोजीशन है वो आप एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आप कहते हैं कि ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर फॉर एग्जांपल आपके पास 2 डायमेंशनल सिस्टम है और उसमें हमारे पास कोई पॉइंट है x or y coordinate system में, and we want to locate this point. Then what we will do, we will point a vector from the origin to that point. Let's say point is at the 1 1 position, then we will move 1 towards the x-axis and 1 towards the y-axis, and then at that point the position of the point will be specified by coordinates 1 and 1. Similarly, in crystals we also do that, the same thing, and we use square brackets to represent a vector, and we use small brackets, parentheses, for the planes, for the direction of planes. Plane is a, a 2-dimensional symmetry, like this is a plane, and a vector is a 1-dimensional line which represents which connects actually the 2 points. So we, in the crystallography, we represent vectors by the square brackets, and we represent planes with the parentheses or small brackets. So let's suppose, for example, this is a cubic structure showing you in the book, that this is, let's suppose, the origin, and we may take origin everywhere at every corner, 8 corners of the cube. Origin is arbitrary. This is not a fixed value that we have to take. We can take it here, we can take it here, 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 here. Everywhere where there is a corner, we can take the origin as well. This is not a strict convention. Suppose we have the origin at this point where there is a cursor, and we assume that each side of the box is has the length equal to 1. This is an assumption just for the simplicity. And if we want to show a vector from, let's suppose, this point to, suppose, this point C, this is the point. If I want to locate a point from going from origin to this point, this is actually x-axis, suppose, and this is suppose y-axis, and this is suppose z-axis. And
Again, the choice of axis is not fixed. This is again arbitrary. You may choose x-axis along this line, y-axis along this line, and z-axis along outward. Or you can change also this convention. You may take this as a y-axis, this as z-axis, this as x-axis. This is not strict rules in the crystallography. These all things are arbitrary. You can make your choices to facilitate yourself, just to understand the things. They all are equivalent, so you can choose them everywhere. So if I choose this as x-axis, this as y-axis, and this as z-axis, and I want to locate the point C, then the coordinates of the point C will be, the coordinates of origins are 0, 0, and the coordinates of the point C will be, okay, 0 along the x-axis, 1 along the y-axis, and 0 along the z-axis, because this point C has not moved along the x-axis, not moved along the z-axis. It has only moved along the y-axis. So its coordinates will be 0, 1, and 1. So that is the simple way to calculate the direction. So its direction will be 0, 1, 0 और उसके अराउंड जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे. इसी तरीके से अगर मैं डायरेक्शन जो है वो 1, 1, 1 कैलकुलेट करना चाहूँ, डायरेक्शन 1, 1, 1 अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो कहाँ पर होगी. 1, 1, 1 से मुराद ये है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी 1 मूव कर रहा है, वाई के अलॉन्ग भी 1 मूव कर रहा है, और जी के अलॉन्ग भी 1 मूव कर रहा है. तो ये अगर मेरा ओरिजिन है, तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 अगर मूव करें, वाई के अलॉन्ग 1 मूव करें, और z के अलॉन्ग 1 मूव करें, तो ये जो पॉइंट्स जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट ये होगा, और ये Q पॉइंट कहलाएगा. इसकी जो है ना हमारे पास, इसको देखें, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ 1, 1, 1 के साथ शो कर किया गया है. तो ये जो है सिचुएशन है हमारे पास डायरेक्शन निकालने के लिए. ये जो रूल है ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में किसी भी पॉइंट की जो डायरेक्शन है वो स्पेसिफाई करते हैं. तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं अगर हम उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर शो कर दें, और वो मुख्तलिफ पॉइंट्स को शो कर रहे हैं विद इन द क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम, तो वो हमारे पास कहलाएंगे लेटिस वेक्टर्स. अगर मैं आपको यही चीज शो करना चाहूँ किसी विजुअलाइजर की मदद से, ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएं, तो ये अगर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हो, तो ये एक सिंपल कोई भी सिस्टम आप समझ लें, ये क्यूब है, क्यूबिक सिस्टम है जो आपको नज़र आ रहा होगा. मुख्तलिफ एंगल से मैं आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, just to explain the idea, because I cannot draw the things on whiteboard, so it's much proper to show you by a visualizer. Okay, this is something like a cube, a cubic symmetry, and I put it like on the x-axis. Suppose this is my x-axis, this is y-axis along the B, and z-axis along the C. And I want to draw a vector, so I go to vectors, and okay, let's say this is the origin. Now I draw a new vector, suppose showing 1, 0, 0 coordinates with that. Okay, I do it like this. It's a modulus. I reduce the modulus like this one. Okay, then okay. Okay, now you may see that this is a vector representing 1, 0, 0. Okay, आप देखें कि ये हमारे पास एक्चुअली जो है, ये जो एटम सिलेक्टेड एटम नजर आ रहा है आपको येलो सा पीछे, ये ओरिजिन हमने लिया हुआ है. ठीक है, ये देखें, ये ओरिजिन लिया हुआ है. अब इस ओरिजिन से जो है ना हमने मूव करना है 1, 0, 0, यानी
इस एक्सेस के अलॉन्ग, ये जो ए एक्सेस है इसके अलॉन्ग 1 मूव करना है, ठीक है, और बाकी एक्सेस के अलॉन्ग हमने क्या करना है 0 0, यानी बी एक्सेस के अलॉन्ग भी मूव नहीं करना, सी एक्सेस के अलॉन्ग भी मूव नहीं करना। तो ये देखें आप वेक्टर, आपको रेड कलर का जो वेक्टर नजर आ रहा है वो मूव कर रहा है जस्ट टुवर्ड ए एक्सेस आर, जिसको हम एक्स एक्सेस बोल रहे हैं। तो ये इस तरीके से भी आपको शो कर सकते हैं कि ये एक्स एक्सेस के अलॉन्ग ये मूव कर रहा है। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको वाई पे कोई एटम को लोकेट करना चाहता हूँ, यानी वाई पर इसकी डायरेक्शन मालूम करना चाहता हूँ, तो मैं इसी को ही वाई में भी चेंज कर सकता हूँ। इट्स वेरी सिंपल। मैं इसी को थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ। ओके, चलें, मैं कर देता हूँ 0 1 की बजाय मैं 2 कर देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा और एडिट करते हैं इसको, ये थोड़ी सी इसको हम ओके, ये देखें आपको ये अब y की डायरेक्शन में ये नजर आ रहा होगा, यानी कि y पोजीशन को ये लोकेट करने जा रहा है। तो ये क्या होगा, आपके पास 0 2 0 पोजीशन होगी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, 0 2 0। अगर आप इसको वैसे नॉर्मली अगर आप करना चाहें, ये जो 0 2 0 होता है इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आप 2 उसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, तो वो 0 1 0 के इक्विवेलेंट होगा। 0 2 0 हो तो भी वो इसी y डायरेक्शन को ही शो करेगा, 0 1 0 हो फिर भी वो y डायरेक्शन को ही शो करेगा। 1 तो बेसिकली एक यूनिट है, ठीक है ना, तो यूनिट आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, यानी लेंथ को आप कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, ये एक्चुअली उसका कॉन्सेप्ट है। लेकिन असल में जो उसकी डायरेक्शन है वो डिपेंड कर रही थी एक्सेस के ऊपर, मतलब 1 0 0 हो तो वो एक्स एक्सेस की तरफ जा रहा होता है। अगर आपके पास 5 0 0 फिर भी वो एक्स एक्सेस की तरफ, क्योंकि उसमें y और z कोऑर्डिनेट 0 होगा। इस तरीके से अगर आप z एक्सेस की तरफ जाना चाहेंगे तो वो 0 0 1 होगा, या आप 0 0 2 ले सकते हैं, 0 0 3 ले सकते हैं, 0 0 5 ले सकते हैं, यानी पहले दो एक्सेस उसमें 0 होंगे और थर्ड एक्सेस जो है वो उसके ऊपर शो हो रहा होगा। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात औकात आ जाता है, वो ये होता है कि समटाइम्स you have negative directions as well. So for example, you have to move along the negative side of the x-axis. Then what will you do? You can take the origin at somewhere else. Like in current situation, I may take the origin here and at this selected atom, because origin is not fixed, origin can be changed. So if this is the origin, then you can move in the minus direction. This backward direction is the minus direction. Okay, and if you have to move on, let's suppose from somewhere from the left, you may take the atom here, you may take the atom here, you may take the origin here, everywhere you can take the origin. So sometimes you have the question like 2 bar 0 0, and this bar means the negative sign. ये जो दो के ऊपर एक नेगेटिव साइन बना होता है उसको हम कहते हैं 2 बार, ठीक है, वो किस चीज को शो कर रहा होता है, वो शो कर रहा होता है नेगेटिव डायरेक्शन को। फॉर एग्जांपल मैं अभी इस बुक से आपको कोई एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूँ, like this one, this is 1 bar 1 0, 1 bar 1 0 means 1 is negative, in the negative direction, moving along the left side of the direction or downward of the direction, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम ओरिजिन को यहाँ पर ले लेंगे तो इससे जब नीचे हम मूव करेंगे तो -1 होगा, लेकिन ओरिजिन अगर हम यहाँ पर लेंगे और अपवर्ड मूव करेंगे तो वो +1। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, हमारे पास कहलाते हैं लैटिस वेक्टर्स। लैटिस वेक्टर्स बिल्कुल उसी तरीके से हैं जिस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, सिंपल वेक्टर्स होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर, ठीक है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है। उसके बाद हमारे पास आती है प्लेन्स। प्लेन क्या होती है, प्लेन 2 डायमेंशनल सिमेट्री को कहते हैं, यानी किसी भी सिस्टम की मुख्तलिफ साइड्स होती हैं और एक साइड, हर साइड को हम प्लेन कहते हैं, ठीक है, और उन प्लेन्स को हम शो कर सकते हैं। मतलब एक प्लेन होगी जो एक्स एक्सेस के पैरेलल होगी, एक प्लेन होगी वाई एक्सेस के पैरेलल होगी, एक प्लेन होगी जी एक्सेस के पैरेलल होगी,
उनको हम क्या कहते हैं, लैटिस प्लेन्स कहते हैं। अब आपको देखना ये है कि लैटिस वेक्टर्स में और लैटिस प्लेन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, लैटिस वेक्टर्स कुछ लाइंस हैं जो एक पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट पर शो करती हैं, एंड lattice planes are two-dimensional planes which represents the whole side of a cube. Let's suppose if you have a cubic symmetry, then the lattice plane is the two-dimensional side of that axis. Let's suppose one thing, one plane is, let's suppose, parallel to x-axis. That is 100 plane, and the planes are denoted by small brackets, parentheses. We continue. If I show you graphically how I can draw the plane, let's suppose uh, if I want to show you the lattice plane, I draw it here like this. Okay, this is a lattice plane. You can observe that this is a plane. Okay, if I take the origin here, if this is the origin, then this plane is parallel to, suppose, y-axis. This is, suppose, y-axis. So you can observe that this plane is exactly parallel to y-axis. I mean कि ये आपके पास y एक्सेस है, तो इसके पैरेलल एक प्लेन बन रही है, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगी, ये आपके पास बनेगी lattice plane parallel to the y axis. Then you can represent it like 0 1 0. Okay, and similarly you can change it in many ways, like this. This is a plane parallel to x-axis, like this. If this is the x-axis, you have assumed this is the x-axis, and this plane is parallel to the x-axis, like this. This is the axis. And if you okay, if you take this as the origin, and this is, suppose, y-axis, then this is a plane parallel to the atom, and you may change it in every direction, in everywhere, like this one also, in many ways. Okay, so each of such plane is known as lattice plane, and it is represented by small brackets. Okay, like this one in the book, it is represented by like this one, 212, 212 with small brackets. This is a plane. If I want to show you some pictures, I don't know where it is. Okay, like this. This is a plane. This is a plane 100 parallel to x-axis 100. These are planes. These are 111 planes, and the diagonal direction like this. This is 110 plane, and many more planes. And again, let's you have to plot a 200 plane. What will you do? You can just simply take the two as common, and you plot 100. Okay, so for a higher digit it's not difficult, because in the crystallography you can simply take the higher digit outside and implement the smallest digit directions, and that is quite well. So in the next lecture we will define the Miller indices. Miller indices are related with these two concepts: crystallographic vectors or lattice vectors, and lattice planes. So you can also read from the book about lattice vectors and lattice planes, and try to uh, draw different lattice vectors as an exercise on your notebook, and then draw lattice planes on your notebook, and compare the results with the examples given in your book. And also you can Google it and visualize different crystal systems by seeing their different
planes. And once your idea of the lattice vector and plane will be clear, we'll move toward the Miller indices, which is very, very important uh, in the concepts of crystallography. Now, if you have any question, you may write it in the chat box, and I will try to answer everything. Any question, please write in the chat box, or you may send me a WhatsApp audio message or simple text message to ask any question you have. Anyone, any question? Okay, all right, no questions. If further you have questions, you may send me messages on the WhatsApp group of the solid state physics, or you may send me an audio message as well. I will be always be there to clear each and every questions you may have about mm, this one. Okay, there's a question, I think. No question. Okay. Okay, good luck. Allah Hafiz.